अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अंजुम सिद्दीकी एक दफ़ा फिर हाजिर अपने तालीमी चैनल के साथ, जिसको देखना तो लाजिम है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मकसद इस चैनल का ये है कि उन स्टूडेंट्स को जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो बड़ी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये इस चैनल की मदद से उन तमाम स्टूडेंट की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और वो स्टूडेंट जो कि MBA की बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए उनकी बुक्स, उनका सिलेबस अरेंज करके उनको दे सकें। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इसको एक सदका जारिया समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक खिदमत होगी उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो कि अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सकें। इससे रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या हमने पढ़ा था अबाउट दी बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट की हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी कि बैलेंस शीट जो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस equity. The balance sheet represents the company position and the performance of the company. It shows the clear position of the company, what is the strength of the company, what is the weakness of the company. It clearly shows in the balance sheet. Balance sheet includes assets, liabilities and equity. The formula, the equation of the balance sheet is asset is equal to liabilities plus equity. In the previous class, we studied in detail about the assets. Assets broken in two parts, current assets and non-current assets. And then we studied in detail about the non-current asset and current asset. Current asset includes account receivable, inventory, prepayment expenses, and cash and cash equivalent. Similarly, non-current asset includes those assets which have life more than 1 year or 12 months in the company. Just like example, building, land, office equipment, vehicle, etc. Now we will study in this class about the liabilities and equities. We can also break the liabilities in two parts. Number one, current liabilities. Number two, long-term liabilities. Long-term liabilities means those liabilities which are due, which will be paid after 12 months or after 1 year. Those liabilities which will be paid after 12 months or after 1 year, these liabilities are called long-term liabilities. It is separately shows in the balance sheet under the long-term liabilities. What are the examples of long-term liabilities? Suppose long-term bank loan. Long-term bank loan, which suppose we have taken a loan from any bank for the 5 years. So this is the more than 1 year. So this loan will be called long-term liability because it will be paid in 5 years. It will be paid after 12 months. So this type of loans will be called long-term loans. If we take the loan from any bank for the 5 years, 3 years, so these loans will be paid after 12 months, after 1 year. So this type of loan will be called long-term loan, or it will become under long-term liabilities in the balance sheet of any organization. Okay. Now, current liabilities. What are the current liabilities? Current liabilities means those liabilities which will be due
which will be paid, which have to pay within a 12 months in a agreed terms and condition within a 12 month or before the 1 year. So these liabilities will be called current liabilities. All those liabilities, again we will explain about the current liabilities, all those liabilities which will be paid within 12 months, within 1 year, will be called current liabilities, and all these type of liabilities will come in balance sheet under the current liabilities class. Okay, what are the types of the current liability we will see. Now there are many categories of current liabilities, which number one, accounts payable, number two, notes payable, dividend payables, employee liabilities payable, customer advance, short-term loan, sales tax payable, income tax payable, unearned revenue, unearned revenue, and current portion of long-term loan. All these components are called current liabilities. Again, I repeat, what are the current liabilities? Current liabilities means those liabilities which we have to pay within 12 months, within a 1 year. What are the current liabilities? Accounts payable, notes payable, customer advance, employees liability payable, short-term loan payable, sales tax payable, income tax payable, current maturity, current portion of the long-term loans. All these liabilities are called current liabilities. Similarly, dividend payable is also called current liabilities. Now we go one by one we explain one by one for your clarification. Accounts payable means payment payable to vendor. Suppose we buy any product, we buy any service from the vendor for credit terms on 30 days. So we have to pay the vendor's liability. Suppose we purchase raw material on terms and condition, we have to pay the payment to vendor in 60 days. So we have to pay in 60 days. So it means we have to pay before the 365 days, within a 12 months. So it is a short-term current liabilities. So we have to pay the vendors in 60 days against the purchasing of raw material. So it is called accounts payable. So all those purchases, all those payments to the vendor which will be due within 12 months, within 1 year, is called accounts payable. Number two, notes payable. Notes payable means those liabilities which we have to pay through bank. Just like we buy product through LC, through financing, and we have to pay within 12 months. So those liabilities also will be categorized in under current liabilities. Customer advance. Suppose we get the money from any customer against our product. हमने किसी कस्टमर से कोई प्रोडक्ट देनी है, उसने हमको 50,000 रुपीज़ एडवांस दे दिया है
और प्रोडक्ट मैं अभी नेक्स्ट 2 मंथ में प्रोवाइड करूँगा या अरेंज करूँगा, तो दिस 50,000 इज माई लाइबिलिटी, बट वी हैव टू अरेंज प्रोडक्ट to the customer in 60 days or 30 days, so that is within 12 months, so it will be current liabilities. Okay, same employees liability, suppose payroll, employee old benefit, employee old age benefits, provident fund payable, these type of liabilities of the employee which will be paid in a month is a short-term liability. It will be coming and will become under the current liabilities. Similarly, short-term loan, sometimes we take the loan from the bank for 6 months, for 8 months, so it is a short-term loan. So it will also come in current liabilities. Same, sales tax payable, income tax payable, these liabilities also due in the month, and we have to pay the income tax and sales tax into government treasury every month. So this is due, these two, sales tax and income tax, this is due in a month. So it is also a current liabilities because they are short-term liabilities. The current portion of the long-term loan, it is very interesting. What does it mean? Current portion of long-term loan. Suppose we took the loan for 5 years. हमने कोई लोन लिया है 5 साल के लिए, तो this is a long-term loan. This will come in the long-term liabilities. But whatever the portion, suppose I took the loan 5 million for 5 years. I took the loan from bank of rupees 5 million for the 5 years, and I have to pay 1 million every year. I have to pay 1 million every year. So 1 million will come in current portion of the long-term loan, because 1 million will be paid within 12 months. Within 12 months, within a year. क्योंकि 5 मिलियन मैंने लोन लिया है 5 साल के लिए, और 1 मिलियन मुझे 1 साल में पे करना है, तो जो 1 मिलियन है वो मुझे 12 महीने के अंदर पे करना है, 12 मंथ के अंदर पे करना है, विदिन 12 मंथ्स के अंदर पे करना है. तो ये करंट 1 मिलियन जो है 500 में से करंट लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होगा, और 400 मिलियन जो है वो 4 मिलियन जो है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होगा. तो इस तरह हमने जाना आज कि लाइबिलिटीज़ कितने किस्म की होती है. लाइबिलिटीज़ 2 किस्म की होती है, करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ें होती हैं वो हमने पढ़ा. करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होती हैं, अकाउंट पेएबल, नॉट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, एम्प्लॉइज लाइबिलिटी पेएबल, कस्टमर एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, सेल टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन. These are all included in the credit side of the balance sheet. Then we come to the equity. What is the meaning of equity? अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में देखें, in the simplest way, अगर we want to define for you, actually मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी ICOM करके आए हैं वो शायद इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं और शायद थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे. लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटी छोटी डिफिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, उनका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जो किसी और सेक्शंस, किसी और डिग्री लेकर आए हैं, जो आर्ट्स से आए हैं, जो इंजीनियरिंग से आए हैं, जिनको अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है. मैं उनके लिए ये सब डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि वो और आप एक पेज पे आ जाएं. फिर हम आगे एडवांस अकाउंटिंग करेंगे. अगर हम इक्विटी की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में इक्विटी की डिफिनेशन क्या होगी. इक्विटी की डिफिनेशन बनेगी कि इक्विटी इज द टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी. व्हाट इज द इक्विटी? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी. ओके,
तो ये सिंपल डेफिनेशन है इक्विटी की कि टोटल एसेट में से टोटल इक्विटी माइनस कर देंगे तो ये इक्विटी बनेगी। अगर एसेट ज़्यादा होंगे, लाइबिलिटीज़ कम होगी, तो आपकी इक्विटी पॉजिटिव होगी, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है, हेल्दी इंडिकेशन है कंपनी के लिए। लेकिन अगर आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो आपकी इक्विटी माइनस में होगी, जो कि कंपनी के वीक होने का बताती है कि कंपनी वीक है, इसकी इक्विटी नेगेटिव में है। तो जब शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी इक्विटी क्या है। अब इक्विटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, अभी हम सिर्फ उसके बारे में जिक्र करेंगे, डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। इक्विटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें चंद मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिटेन अर्निंग, नंबर 3 रिजर्व्स। इक्विटी में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स और शेयर कैपिटल, ये सब इक्विटी के पार्ट होते हैं। जिस तरह करंट लाइबिलिटीज़ के ये सारे पार्ट्स हैं, इसी तरह इक्विटी के 3 पार्ट्स हैं, रिजर्व्स, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इक्विटी बनेगी। यहाँ पे मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। यहाँ हमने बैलेंस शीट को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टेप इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।